Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Once again welcome to my YouTube channels Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Myself Dr. Sanjay Singh, Biology teacher, Subra Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. In previous lectures, I discussed detail about the photorespirations in very details, but today now we are going to discuss the factors affecting the rate of photosynthesis. This is a very important topic for examination point of view as well as competition point of view. Actually, this is the last content of these chapters, that is known as factor affecting photosynthesis. Many factors that influence the rate of photosynthesis either decrease or increase the rate of photosynthesis. So, various factors is responsible, various factors are responsible to determine the rate of photosynthesis. And basically there are two factors which are involved to affect the rate of photosynthesis. The first is known as external factors. Another is known as internal factors. So both the factors that influence the rate of photosynthesis, matlab some factors they are present inside the plant and some factors they are present to the environments, and both the factors they act on plant, they are directly or indirectly affect the rate of photosynthesis. अब ये बात आती है कि what is the external factor as well as internal factor. So first of all, the external factors are many. First is the light or sunlight. Second is the carbon dioxide concentration, and third is water. Light, carbon dioxide, water, and loss is the temperature. Here is the four important external factors that affect the rate of photosynthesis. The first factor is known as light, second factor is known as carbon dioxide concentration, and third factor is known as water, and the last factor is known as temperature. Similar way, the internal factors are many. Age, number of leaves, age and orientation of leaves. Second is the number of leaves, chloroplast, amount of chlorophyll inside the leaves, and mesophyll tissue is also responsible. Mesophyll tissue as well as some genetic makeup. Here is the some internal factors that affect the rate of the photosynthesis. The first, age and orientation of the leaves. I will discuss detail one by one at the time of internal factors. Second, the number of leaves. If the number of leaves are more, the rate of photosynthesis are more. The chloroplast play a very significant role because is a type of cell organism which is responsible for photosynthesis process. Amount of chlorophyll, the chlorophyll is a type of pigment that is known as photosynthetic pigments, or the amount of chlorophyll is also determine the rate of photosynthesis. I will discuss detail. And the mesophyll tissue, they are present in the leaves, and the mesophyll tissue having a chlorophyll or as well as chloroplast.
they are also determine the rate of photosynthesis. And the genetic makeup मतलब the plants की जो genetic makeups होता है, तो आप हम सभी जानते हैं gene play a very important role to determine the physiological character, anatomical character as well as behavioral character. So all the characters they are determined with the help of gene. If the gene having more physiological ability for photosynthesis के लिए वो है, the rate of photosynthesis is maximum in particular plants. So I will discuss detail one by one. Though first of all discuss external factor. The first factor is known as light. Before the external and internal factor, the first of all one scientist discovered the law of limiting factor. What is the law of limiting factor? We first of all discuss law of limiting factor. After that discuss both the factors very detailed. So first of all, what is the law of limiting factors? Law of limiting factor. Limiting factors. The name of the scientist Blackman in 1905. Blackman in 1905 gave the concept law of limiting factor. Law of limiting factor. Limiting factors. इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करें. क्या इन्होंने बात बताया? इफ अ केमिकल प्रोसेस determined by more than one factor, तो therefore क्या होगा? Then its rate will be determined. The rates will be determined by which is the lowest value of factors. Which is the lowest value or minimums जिसका वैल्यू हो वो डिटरमाइन मीन्स एट ए टाइम. इट मीन्स क्या हुआ? इस कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन ऑफ दिस लॉ एट a time only one factor is responsible to determine the rate of photosynthesis that is known as law of limiting factor. Law of limiting factors. देखो ये लॉ क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन. उन्होंने कहा हमने पहले भी बोला कि वेरियस फैक्टर्स, हमने नाम दिया एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर, influence the rate of photosynthesis. Not only one factor is responsible to determine the rate of photosynthesis, more than one factors determine a one chemical process that is known as photosynthesis. तो हमने क्या कंसेप्ट दिया? If a chemical, ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट बात, if a chemical process determined by more than one factor से अगर डिटरमाइन हो रहा है, the rates will be determined by which is the lowest value of the factor. It means at a time only one factor is responsible to determine the rate of photosynthesis, not all. That is known as law of limiting factor up to a certain limit. Beyond a certain limit, the another factor is responsible
to determine the rate of photosynthesis. That is known as law of limiting factor. This is a very important law, and this law proposed by this scientist Blackman in 1905. For example, अगर एग्जाम्पल करके इसको समझा दिया जाए, examples, various factors like CO2 concentration is sufficient, light is also sufficient, there is no any problems here, and the temperature, this is third factors हमने लिया, temperature और लोवेस्ट, ये लोवेस्ट है, हमने यही बात आपको बताया, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द फैक्टर। इट मीन्स कोई भी प्लांट्स होता है तो रेट ऑफ यहां पर जो होगा इसका कंक्लूजन क्या आएगा, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन बाय टेम्परेचर, बिकॉज वो क्या है, बिकॉज विच इज द लोवेस्ट अप टू ए सर्टेन लिमिट, जहां तक उसका लिमिट होगा वहीं तक, उसके बाद ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाएगा। मीन्स पहले ये किसके द्वारा डिटरमाइन हो रहा है, टेम्परेचर, बिकॉज द मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर कई फैक्टर किसी भी प्लांट को हम एक साथ देते हैं तो क्या सारे फैक्टर एक साथ मिलकर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे? नो, नेवर। ओनली वन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज लोवेस्ट। वो लोवेस्ट कौन सा हुआ, टेम्परेचर। तो आपने कहा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अप टू ए सर्टेन लिमिट। इट मींस इफ इंक्रीज द टेम्परेचर देयरफॉर इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अप टू ए सर्टेन लिमिट। इफ वो अपने लिमिट तक पहुंच जाएगा, सैचुरेटेड हो गया, देन अनदर फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट is external factor. I will discuss detail one by one. The first of all discuss on lights, that is known as external factors. The first is known as lights. Light is the very essential factor for photosynthesis. Without light never photosynthesis takes place. Very essential factor for photosynthesis. और उन्होंने कहा है कि the three aspect of lights determine the rate of photosynthesis. The rate of photosynthesis. Rate of photosynthesis. The first is light intensity. That is known as wavelength. So light intensity is also determine the rate of photosynthesis. Is the linear relationship between linear relationship between CO2 fixation and this is the first important point, and light intensity during low light intensity. हम लोग इसको ग्राफ प्लॉटिंग से अच्छे से समझ सकते हैं। Here the graph plottings, here is the CO2 fixations,
CO2 fixation, CO2 fixations up to a certain limits. Here is the light intensity, intensity that is known as wavelength of lights, up to a certain limits. A, B, C and D and E. A light intensity start from here to there. ये wavelength में होगा in nanometers. This is the first important points. Linear relationship between CO2 fixation and light intensity during low light intensity. Here is the low light intensity. When increase the light intensity, the increase the rate of CO2 fixation, that is known as photosynthesis up to a certain limits. एक लिमिट तक आ रहा है, मतलब लो लाइट इंटेंसिटी को अगर आप देख सकते हो कि अगर इसको आप बढ़ाते हो तो लीनियर रिलेशनशिप हो रहा है, मतलब इसको आपने इंक्रीज किया तो रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज आल्सो इंक्रीजेज. तो दिस इज सो द लीनियर relationship. This is the first important points. And the second important points means a higher light intensity does not show any effect of CO2 fixation. This is the very important second important points here. इसके बाद आप देखो एक स्टेडी स्टेट में जा रहा है कि अगर आप समझो here is the 760 नैनोमीटर और here start from 390. This is the visible spectrum wavelength of the lights. It start from 390 nanometer to 760 having 7 different colors. They play a very significant role, बहुत important role for photosynthesis. इन्होंने कहा कि beyond 760 अगर आप if increase the light intensity increase करते हो, there is no any effect of CO2 fixation, so always constant. मतलब कुछ भी आपको ऐसा दिख नहीं रहा है. बट अगर आपने तीसरे कंडीशन में करा हो, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इफ increase the light intensity above the normal points for longer periods अगर आप then therefore damages the chlorophyll pigment, pigments. देखो तीसरी बात कर रहे हैं कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते चले जा रहे हो तो ये क्या करेगा, पूरा डैमेज कर सकता है. और रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर डैमेज्ड. क्यों डैमेज हो जाएगा? क्योंकि हाई इंटेंसिटी हाई वेवलेंथ पर मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर डैमेज्ड हो जाते हैं. तो लाइट इज ए टाइप ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. अप टू ए सर्टेन लिमिट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस will be increased. Beyond a certain limits, if again increase the light intensity or duration, ध्यान देना light intensity or wavelength of the light, there is no any effect the rate of CO2 fixation. If मैंने तीसरी बात, if increase the light intensity above the normal points, अगर वह उस पॉइंट के for a longer period के लिए आप करते हो
ज़्यादा समय के लिए रख देते हो, डैमेज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अल्टीमेटली डिक्लाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान देना, डैमेज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देयरफॉर क्या होगा, डिक्लाइन द रेट ऑफ photosynthesis. This is the first important aspects, that is known as light intensity or wavelength of the lights. They affect the rate of photosynthesis. The second aspects, नेक्स्ट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स that is known as, second is carbon dioxide concentration. Carbon dioxide is a type of major limiting factors, that is known as major limiting factor. This is the first important points, major limiting factor. Second important points, raw materials of photosynthesis. This is the raw materials of photosynthesis. And the next important points, the normal concentration of CO2 in environments are 0.03 to 0.04%. This is the normal value of the carbon dioxide concentration in the environment. अब ध्यान देना, मैंने इसका कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है इन द इन्वायरमेंट्स, बट दिस कंसंट्रेशन इज सफिशिएंट. ये क्या है, कंसंट्रेशन जो होता है ये सफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ये सफिशिएंट होता है. ध्यान देना, हमने क्या कि अगर इसके ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, आफ्टर दैट लीड्स ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग को तबाही आ जाती है. इसलिए जो प्लांट्स होते हैं, CO2 इज ए टाइप ऑफ CO2 एब्जॉर्बर होते हैं. और CO2 इज व्हाट, CO2 इज द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस तक करता है. ये देखा गया, इफ इंक्रीज दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ CO2 concentration in the environment, 0.03 to 0.04%. If increases the concentration of carbon dioxide up to 0.05% तक वह इंक्रीज करता है, तो क्या करेगा, इससे क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is also increases. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रही है, also increases. इफ मीन्स स्टार्टिंग में आपने देखा कि जब हमने इसको बढ़ा तो 0.05% बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स. अगर इससे अगर आप जाते हो बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स, अबव इफ increase, this is the another point, if increase the concentration of carbon dioxide above 0.05% for longer period के लिए अगर वह रहता है तो क्या करेगा, डैमेजिंग, ये डैमेज कर देगा, डैमेजिंग
क्लोरोफिल ये भी डैमेज करेगा, एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस PS मैंने शॉर्ट लिखा, डिक्लाइन, वो डिक्लाइन हो जा रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्लाइन। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस is determined up to a certain limit by the carbon dioxide concentration. If CO2 concentration above 0.05%, therefore for longer period of times, ध्यान देना longer period, therefore damaging of the chloroplast वह damaging हो जाएगा, as well as उसके बाद क्या होगा, rate of the photosynthesis will be declined, वह decline हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात कंडीशन था कि व्हाट इज़ द CO2 कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू एंड कहाँ तक वो इंक्रीज किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में भी हम डिस्कस किया जाए। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, तो ध्यान देने का, C3 एंड C4 प्लांट्स respond differently to carbon dioxide concentration, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंटली। आप देख सकते हो C3 प्लांट्स, ये जो C3 प्लांट्स होता है सैचुरेटेड जो फिक्सेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वह आप देख सकते हो ये नियर अबाउट्स आपका जो सेचुरेशन है 450 माइक्रो मोल पर लीटर्स -1, दैट इज नोन एज ppm में इसको आप इंडिकेट कर सकते हो। 450 माइक्रोमोल पर लीटर, मतलब ज़्यादा उसको CO2 चाहिए फॉर फिक्सेशन इन कंपेरिजन टू द C3 प्लांट। बट इन केस ऑफ द C4 plant saturated to carbon dioxides in near about 360 micromole per liter, in also the ppm में इसको हम मेजर करते हैं। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ध्यान देने की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन टू C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। तो आप देख सकते हो कि C3 प्लांट्स रिक्वायर्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन कंपेरिजन टू द C4 प्लांट। वाई? अब ये क्यों होता है? जब हमने C3 प्लांट की बात कर रहे थे तो C3 प्लांट्स फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स एंड द C4 प्लांट्स फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो टेम्परेट रीजन में क्या होता था? लो लाइट इंटेंसिटी, लो टेम्परेचर्स एंड हाई CO2 अवेलेबिलिटी। At this time, Rubisco enzymes bind with carbon dioxide to start C3 pathway or Calvin cycle. But in case of C4 में हमने क्या बोला था, वहाँ पर कंडीशन इन ट्रॉपिकल कंडीशन में चेंज हो जाता है। वहाँ पर हमने ये बात बताया था कि ट्रॉपिकल हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लो CO2 अवेलेबिलिटी। एट दिस टाइम क्या होता है, वन अनदर एंजाइम्स are present in the C4 plant that is known as PEP carboxylase. They bind with carbon dioxide at low concentration पर bind कर देता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि C4 plant जो होता है are fully saturated, are highly saturated, minimum value than the C3 plant, 360 micromole per liter. Here is the important graphs mentioned in here. Here the two graph, one graph represent the C3 plant, another graph represent the C4 plant for rate of CO2 fixation as well as carbon dioxide concentration to different plant. तो यहाँ पर आपने देखा, मैंने बताया C3 and C4 plant respond differently to carbon dioxide concentration. So here is the second important factor that is known as carbon dioxide concentration. तो here the both the factors, आज हम today two factors को हम लोग ने explain किया. The first is the light and second is the carbon dioxide concentration. Rest factors
I will discuss detail in next video or coming video. So these topics are very important. Once again repeats you. These topics are very important for examination point of view as well as competition point of view. So thank you for watching this video. Have a nice day, all of you.